The great Thierry Henry once said, sometimes in football you need to score goals. Basically, that is the essence of football. बाकी बहुत कुछ important है. Tactics important है, defending important है, goalkeeping important है, midfield important है, सब कुछ important है. But at the end of the day, that score line 1-0, 2-0, 2-1, whatever it is, that ends up being the most important. And the people who are supposed to do that also by default then become the most important people somehow on the pitch. But that is where a slight change, a slight trend shift has been happening over the last decade, and it's still not close to resolved. Welcome back to Top Corner. आज हम बात कर रहे हैं द डाइंग आर्ट फॉर्म ऑफ द नंबर 9. कैसे एक टाइम पे जो सुपरस्टार्स होते थे, द नंबर 9, द स्ट्राइकर, दैट इज स्लोली गोइंग डाउन, एंड कैसे आज की डेट में सप्लाई इतनी शॉर्ट है ऑफ एक्चुअल टैलेंटेड प्रॉपर नंबर 9 टू लीड द लाइन. लोग कुछ भी पैसे दे रहे हैं बिना एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के भी, प्योरली बेस्ड ऑन पोटेंशियल. सो या कहां से शुरू करें? आज शिवम से शुरू करते हैं, ओल्ड मैन विजडम से. Thanks, thanks for calling me that. But yeah, it is, as I think we've all spoken about, kind of a dying art. It has been for a decade, a little more, a little less. Yeah. Why though? Because of the shift in tactics of football that we've seen over the past 10, 15 years, majorly. Take it the last 15 plus. You've got to put a little bit of blame on Guardiola for this, because of his success without a proper number 9, because of Spain's success without a proper number 9 for a long time. Without then this blueprint was and is still being followed by so many other managers still. The change in tactic from the time when two strikers used to play on the pitch at all time. We've been down to one striker playing on the pitch. और वो भी जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर नंबर 9 ही हो, वो फॉल्स 9 भी हो सकता है, वो सिर्फ वाइड जाने के लिए भी हो सकता है ताकि विंगर अंदर कट जाए. रोल्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं. एंड just to throw in a few names, like the players that we've seen, Shearer, that we saw, not in the entirety of his career, but still a lot. The Drogbas, the Van Nistelrooys, the Rauls, Morientes, Inzagis, Crespos, even आगे जाते हुए. Too many to just name. So many names. वो अब बहुत 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 कम रह गए. There is a serious decline in both the quantity and the quality of strikers that are available in the market. So much so that we can count the top strikers in the world on one hand, flat out. True. यार on one hand भी क्या, आप अगर देखो in terms of established strikers, and this is something I'll put to the younger two of this panel. In the last few years, अगर हम बात करें established strikers, Robert Lewandowski, and when I say strikers, I'm not talking goal scorers, because goal scorers में फिर आपके Ronaldos and Messis वगैरह सब count होते, Salah, ये सब. But I'm talking proper number 9 leading the line on the pitch. Hold that position. That is where there has been a dearth. अगर आप देखो Lewandowski, अगर this is a name that everybody will take. Haaland recently, but still not there just yet. Harry Kane is one who has to be counted amongst this whole thing. Benzema is one. So I can't think of many others at this point in time. I won't call Luis Suarez an out number 9. He was there, but he wasn't like, when we're talking about that mold, there are different kinds of strikers, yes. But we're talking about that big center forward who's going to be there, who's going to be leading the line, making those runs and only those runs and not going anywhere else. Those are the players we're talking about at this point. And Bebo और Rex से दोनों से पूछना चाहता हूँ मैं ये, who are the people you think are in this list apart from ये जो 2-3 मैंने बोले हैं? देखो अभी के लिए when we started football, me and Rex भाई, हम 2-3 साल के गैप में ही देखना स्टार्ट किए फुटबॉल. सो उसमें भी we started with 4-3-3 because उस टाइम पे जिधर भी देखो there were Spanish managers, and all the Spanish managers, literally all, were using 4-3-3, the Guardiola system of playing football. So हमको literally starting में as usual Ronaldo का era था जो Juventus का, तो we knew he is a proper striker क्योंकि Juventus में he was the number 9. फिर हम अगर यूनाइटेड में आ जाते हैं, लुकाकू को हमने साइन किया था for that role, but it did not turn out. But see, that was his role. Anthony Martial, the big Not famous really. boy. मार्शियल का नंबर 9 बारा इतना नहीं था रोल. But भाई यूनाइटेड भी हो ना, यूनाइटेड भी हो तो इब्राहिमोविच और कवानी दोनों. हाँ, but if you see that also कि मार्शियल का भी एक था कि नंबर 9 इसको बनाने के लिए कोशिश हुई थी यूनाइटेड में, बट हुआ नहीं. देन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे
कि नंबर 9 को ये लोग ट्राई कर रहे थे एक नंबर 9 हो जाए, बट हम अगर वो जो 4-3-3 का अगर नहीं चलता तो ये लोग फिर नंबर 9 की तरफ जाते थे। ये तो 4-3-3 में तो हम विंगर्स के ऊपर सारा निर्भर रहते थे, ये लोग अच्छे विंगर बन गए तो आपका काम हो गया। सो अच्छे नंबर 9 अभी जाके जो बने हैं ना, जो हालांड बोल दो आप, अभी ग्योकरिस बोल दो, सेस्को एंड ऑल, तो अभी वो आर्सेनल के लिए अभी नाम इतना उछल रहा है, बट दीज टू आई फील आर द रियल नंबर 9, क्योंकि ये लोग आगे ही रहते हैं। दे आर नॉट लाइक कि पीछे आके वो जो विंग्स में खेल लेंगे, नो, दे आर यू नंबर 9, ये आगे रहेंगे एंड यू हैव टू सप्लाई देम द बॉल एंड दे आर द फिनिशर एंड वो गोल मारने वाले आपके नंबर 9। तो हाँ, I probably Rex can correct me if I'm wrong here. I don't want to count Gyökeres there just yet. He's had 2 good seasons in a league that is known to be not the toughest at this point in time. Haaland has done very well outside, but अब हमने जैसे अभी 1-2 वीडियोस पहले ही बात कर रहे थे when we were talking about Gyökeres, we were talking about how a lot of strikers from the Portuguese league, they have gone out and not really clicked as much जो हम लोगों ने सोचा था। एक टाइम पे होता था जब पोर्तो से खतरनाक स्ट्राइकर्स निकलते थे, फाल्काओ वगैरह, पर अब वो नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो आई डोंट नो इफ वी कैन काउंट ग्योकरेस देयर, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम यंग प्लेयर्स की बात करें हु आर probably available in the market, because at this point in time United needs a striker, Manchester United needs a striker, Liverpool needs a striker, Arsenal needs a striker, Barcelona needs a striker soon. नेक्स्ट ईयर उसको उनको भी चाहिए। Exactly. Probably we need a striker at the moment, but our financial woes won't let us have that happen. Exactly. तो अभी जो रेक्स भाई, the supply of strikers that is there right now, do you think काफी underwhelming है अभी? क्योंकि जैसे अभी वैभव ने भी नाम लिया एकेटीके और सेस्को, ये लोग 13-15 ऐसे गोल्स मार के आए हैं पिछले सीजन में अपने लीग में, and the teams are still demanding 100 million for these players. भाई Do you think थोड़ा सा underwhelming है? जस्ट वन एडिंग, रास्मुस हॉयलैंड भी हमारा नंबर 9 के लिए आया था, एंड उसका भी अटलांटा में ज्यादा गोल्स नहीं मारे थे, 11 या 10 गोल मार के आया था, एंड दैट फॉर 70 और 75 मिलियन। वही ह्यूज ऑन पोटेंशियल, एग्जैक्टली, पोटेंशियल पे ना, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग रेक्स, कि ये इतना अंडरवेलमिंग ऐसा क्यों है आपके हिसाब से? देखो, आप तीनों के लिए तो मैं, ये तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग पीएल देखते हो, प्रीमियर लीग में फिर भी स्ट्राइकर्स दिख जाते हैं। भाई ला लीगा में तो कोई है ही नहीं, सारे स्ट्राइकर मतलब लिंक अप प्लेयर होते हैं, आउट एंड आउट नंबर 9 होता ही नहीं कोई भी। रॉय इग्लेसियास एक बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सोर्लोथ, और तो लीग में बस लेवेंडोस्की है जो अपने पीक को पास कर चुका है। अभी वो भी स्पेन में डेवलप नहीं हुआ है, वो भी स्पेन में डेवलप नहीं हुआ इन द लास्ट 10 इयर्स। स्पेन में ना ला लीगा में आपको कोई स्ट्राइकर मिलेगा ही नहीं, ज्यादा लिंक अप स्ट्राइकर मिलेंगे, बस नंबर 9 नहीं मिलेगा। That is a Spanish thing, but आप अगर देखो तो जर्मनी, इटली और इंग्लैंड आर प्लेसेस जहां पे स्ट्राइकर्स डेवलप हो रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट still the supply is not as great, relentless जो एक टाइम पे था। आप एक टाइम पे देखो हर, क्योंकि भाई टैक्टिकल इवोल्यूशन जो बोलते हैं ना, अभी फुटबॉल में बहुत चल रहा है, क्योंकि आपको स्ट्राइकर्स की इतनी नीड नहीं है। आपको जो नंबर 9 है, आपके मैनेजर्स डिमांड करते हैं कि उसको प्रेस करना है, डीप ड्रॉप करना है और बॉल जीतने की कोशिश करना है, ताकि आपका मेजोरिटी जितने भी टैक्टिकल चेंजेस है अभी काउंटर प्रेस के अराउंड ही चल रहा है ना। तो आप अगर वो आउट एंड आउट नंबर 9 आपका रहेगा तो आप प्रेस से आपका एक प्लेयर तो कट ही गया। तो इसीलिए नंबर 9 अभी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा वाला प्लेयर चाहिए जो प्रेस करे और लिंक अप प्ले बना के फ्री मैन को आगे बढ़ाए। इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये वाला चेंजेस हो रहा है अभी ग्राउंड लेवल पे, इसीलिए अभी नहीं मिल रहे अभी ज्यादा स्ट्राइकर्स। एंड अगर एडिंग टू दैट ऑल्सो, अगर अभी का सिचुएशन अगर कंपेयर करूं किसको, बाइंग अ स्ट्राइकर राइट नाउ इज कंपेयर्ड टू बाइंग म्यूचुअल फंड्स। उसमें भी होता है ना, वो बाद में आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज बाय ऑन योर ओन रिस्क। वैसे ही चल रहा है ना गाइस, यू इन्वेस्ट अ लॉट इन द मार्केट एंड आपका लिटरली आप होप करते हो कि कर जाए। जैसे यूनाइटेड का बेस्ट एग्जांपल है हॉयलैंड, मैंने बोला कि 70-75 मिलियन हमने इन्वेस्ट किए, मार्केट ने हमको धोखा दे दिया। बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे, बहुत एग्जांपल्स हैं। दैट इज द होल पॉइंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। नॉट अगेन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लुकाकू ले लो, नूनेज ले लो, गोंचालो रामोस ले लो, इतने एग्जांपल्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट एट दिस पॉइंट, एंड शिवम कैन हेल्प मी विद दिस, डू यू थिंक इट इज कमिंग बैक अ लिटिल बिट? Like when we talk about Pep Guardiolafication of
this whole thing, he's also somebody who's used Haaland to great effect. Yes. He when you talk about Pep Guardiola himself, Lewandowski also was used by him to great effect. Exactly. So it's not like he is averse to, but जैसे रेक्स ने बोला काउंटर प्रेसिंग में यू नीड पीपल हु कैन एक्टिवली एटलीस्ट ट्रबल डिफेंडर्स को, इफ नॉट पूरा पीछे तक आ, एंड पॉसिबली ये थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है क्योंकि अगर I won't count Spain as an example because I won't count La Liga as an example because Spain का सिस्टम हमने पिछले 15 साल से देखा है. डेविड वे और फर्नांडो टोरेस के बाद कुछ नहीं आया है. हाँ who we can say कि हाँ भैया ये तो खतरनाक स्ट्राइकर. ग्रासरूट भी स्पेन के अगर आप चेक कर लो ना, Exactly, that is a Spanish thing. That is a Spanish Spanish thing. thing. It is वही. भाई बच्चों को ही लिटरली आप नंबर 9 खिलाने नहीं देते हो. इट्स बच्चों को वही, सारे वही. जगह ट्राई करते हो. Exactly, It continues exactly. forward. But do you think things are changing a little bit? क्योंकि हम देखते हैं अगर शिवम प्रीमियर लीग में स्ट्राइकर्स ऑलमोस्ट हर टीम को लीड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम. आप इवन द लेसर टीम सो टू स्पीक, द लाइक्स ऑफ डिलैप हो गया, क्रिस वुड हो गया, ऑल ऑफ दीज हैव हैड गुड स्ट्राइकर्स एंड गुड स्ट्राइकर्स कंट्रीब्यूट in terms of like And how they are Brentford, and how Brighton, they're ये सारी. they are getting the goals majorly. Exactly, and the For them. top teams as well, Yes. no doubt about. आर्सेनल का सबसे बड़ा रीजन क्या बोलते हैं लीग ना जीतने का? स्ट्राइकर नहीं था जी. I know there were other reasons, but स्ट्राइकर नहीं था is a big reason, no doubt about it. एक्सक्यूजेस तो हमेशा रहते हैं उनके, बट अलग. हाँ, so today if talking about in the market, there is your Victor Osimhen, whatever his pronunciation. Gyökeres है on the market apparently. Then you have your Seskos and Eketikes and Isaks. I don't know if he's actually on the market, but I'm talking about पोटेंशियल. थोड़ा सा वापस हो रहा है. ये ट्रेंड रिवर्स होता लग रहा है तेरे को? Yes. It is happening because as we all know, football cycles में चलती है, ठीक है. ऑलमोस्ट कोई भी स्पोर्ट्स साइकिल्स में चलता है. अब वो वाले टैक्टिक्स पुराने वापस आते हैं. सी विद ग्रेट सक्सेस comes a great lot of copies of that success, and that's what happened in the past 10 15 20 years. We saw great success through different systems. Everyone wanted to copy it. Some got that success, some didn't. Now we are seeing different tactics. Now we are seeing a lot of two-man striker teams as well. Those playing with three at the back are playing with two strikers at times. Lautaro Martinez, Marcus Thuram is a great example for that. Now we are seeing. I think even Atlanta खेलते हैं. एक तो वो मटेओ रेटेगुई ऐसे करके कुछ एथलेटिको नाम है भी उसका. खेलती है ना डबल स्ट्राइकर. Double striker, but उनका एक जनरली ग्रीजमैन होता है and Alvarez is of course he's pretty talented. आ जाता है कभी-कभी बारका देख के. But this tactical shift that we are seeing slight happening, we can see it happening, is I believe the primary reason we are seeing the strikers back in the market. I think Weber put it well, grassroots पे ही strikers नहीं थे for the long time because play style everyone changed how they approach football, how they viewed every player's role in the team. Strikers का role initially when we used to see football very initially early 2000s was to just score goals. Doesn't matter how many chances they get. It doesn't matter if they pressed or didn't press. एक example, United की top team 99 में 4 strikers, bench और प्लेइंग 11 मिला के 4 स्ट्राइकर्स. इमेजिन आज की डेट में किसी के पास हो सकता है एंडी कोल भी पड़ा है, टेडी शेरिंगहम भी पड़ा है, सोल्शायर भी पड़ा है. मैड्रिड के पास कितने स्ट्राइकर थे भाई एक टाइम पे? राउल, रोनाल्डो और एक और था, मैं नाम भूल गया. ओरिएंटेस तक खेलता था. ये तीन इकट्ठे खेल रहे थे. Then they brought in Van Nistelrooy very soon. I don't know who all had. So we are not going to see that much, but we are seeing, even if teams are playing with one striker, even if teams are playing with two strikers, we are finally seeing strikers, of course, थोड़े hybrid. They have to press. आज की डेट में most strikers, most players in the team, they have to press well, counter press, as Rex said, is very important part of the game. But एक goal scoring instinct जो स्ट्राइकर के पास होता है, उसकी नीड अब टीम्स को वापस लग रही है. एंड लेट मी टेल यू दिस एंड एनीवन वाचिंग, दैट गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट, आइदर यू आर बोर्न विद इट और यू आर नॉट. It cannot be replicated. It cannot be trained very well. It can be, but not to that extent. You are born with that instinct कि गोल मारना है और मेरे को पता है गोल कहाँ है, मैं गोल मार. You are born with it, and either it is stamped out of you or it is encouraged. That is it. That is it. But and this is something to all three of you. दिस इज समथिंग जो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, पिछले 1-1.5 सीजन से इनफैक्ट, क्या थोड़ा सा डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है अब ऑफ द होल टोटल फुटबॉल साइड ऑफ थिंग. लाइक ओके, काउंटर प्रेस इज इंपॉर्टेंट, बट काउंटर प्रेस इज नॉट अ न्यू आइडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट
apart from that, like everybody trying to play from the back, everybody trying to have these cute passing channels midfield में, everybody trying to have the same system. थोड़ा सा क्या disillusionment हो रहा है, क्या teams को actually समझ आना शुरू हो रहा है कि maybe, just maybe, we all don't need to play the same style. Because आप देखो, अगर Arsenal had this problem, especially towards the later stages of Arsene Wenger's tenure, Chelsea had this problem बीच में with a couple of managers. United has had this problem, and Going. it's literally up. You go back to even La Liga. La Liga teams also have had this problem. Atletico is the only team that has held this fort down कि भैया हम नहीं खेलेंगे. We will not buy into this, and they've been successful with that. उनका एक कोच है ना 15 साल से, वो भी है. Again, Madrid have been successful with that. Madrid has not bought into the. Ancelotti did not. And maybe teams are actually finally seeing कि भैया probably we don't all need to do the same things. भाई बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं ना, अगर किसी ने अभी फुटबॉल देखना शुरू किया है ना, यूसीएल जो ग्रुप स्टेज मैच था, आई थिंक सो, स्पोर्टिंग वर्सेस सिटी का मैच इज द बेस्ट एग्जांपल. स्पोर्टिंग वी ऑल नो प्ले अ बैक 3-5-2 with a double pivot And direct against football and against Guardiola's 4-3-3 with a full stack. Rodri नहीं था, ये एक्सक्यूज नहीं बोल सकते, एक प्लेयर नहीं है तो पूरा ये नहीं है, बट खोल दी थी सिटी को उस दिन. The level of passing and the level of coordination जो अमोरिम की टीम ने, स्पोर्टिंग ने, एंड स्पोर्टिंग कोई बड़ी वाली टीम नहीं है. इफ यू सी द मार्केट वैल्यूज ऑफ द बोथ टीम्स, इट्स नोवेयर क्लोज. बट आप देखो एक नई लाइनअप ने 3-5-2, इट्स नॉट अ न्यू लाइनअप. फर्स्ट ऑफ ऑल, it's a different lineup from what is the traditional big going for last 1-2 decade. So आप देखो 3-5-2 ने कैसा खोल दिया, and now you see more managers coming up with different lineups. 4-3-3 अभी बहुत कम हो चुका है, मींस है अभी, but the level जो पहले था जब मैंने और रेक्स भाई ने देखना शुरू किया था कि सब 4-3-3 कर रहे हैं, 2 विंगर्स चाहिए, एक फिनिशर चाहिए, वैसा अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है. आप अभी बेस्ट एग्जांपल जो दिया हमने एथलेटिको का, अभी अमोरियम का सिस्टम देख लो, इट्स वंडरफुल. इंजागी का सिस्टम देख लो. इटालियन टीम्स को ओवरऑल आप इटालियन लीग में देखो, अगर टैक्टिकल सेटअप, यू लुक एट Napoli. Napoli don't try to overplay things. They're fairly direct. You look at Inter Milan. Again, Barca came in second best over 2 legs. But overall, if you look at it, Inter Milan did well against that. PSG का यूथ और एनर्जी के सामने इस सीजन कोई नहीं टिक पाया, स्पेशली सेकेंड हाफ में. But apart from that, Inter Milan did very well in a different system. Yes. And आप अगर Italian teams को देखो, they are actually a lot more technically adept. You look at an Atlanta playing, they can actually have like 3 different systems in one game. Exactly. Yeah. And the Napoli do that. maybe just maybe that trend is reversing. It is. One more thing to add, भाई सुजय भाई, आपने बोला ना कि मद्रिद ऐसे नहीं खिलाती. At Madrid they don't buy players according to their system. They build system around their player. That is why Ancelotti was successful. That is why Ancelotti was successful. Yeah. उसके ऊपर से एक चीज और ऐड करूँ अगर ना, आप देखो ये स्ट्राइकर का जो का गो डाउन हुआ है, उसके बीच में आप देखो यू हैव अ barrage of wingers who have just come up and put in those number of stats. वो गोल्स पे गोल्स मार रहे हैं. ऐसे वाले विंगर्स पहले नहीं होते थे कि आपके विंगर्स आपके मतलब टॉप स्ट्राइकर लिस्ट में आ रहे हैं, टॉप गोल स्टार्स में वो लीड कर रहे हैं. आप हर एक लीग में देख लो, साला यहाँ पे एम्बुएमो, फिर यमाल, राफिनिया, सारे तो विंगर्स ही है ना, वो लीड कर रहे हैं अभी गोल स्कोरिंग चार्ट को. लास्ट ईयर विनीशियस एम्बापे डेम्बेले, ये जो विंगर्स थे, इनको स्ट्राइकर भी खिला देते हैं टीम. To accommodate more wingers. So of course winger role has changed so much in the last 15 years from That's traditional. But maybe there is hope for that traditional striker role. I know there is a football romanticism attached to this particular hope, but यार मजा तो आता है striker leading the line and leading it well. It's always a different element to the game. थोड़ा हमेशा वो है ना, वही है सुजय भाई कि हमेशा घर में दाल चावल कितना खाओगे तुम लोग. कभी पनीर चाहिए, कभी थोड़ी मशरूम चाहिए, कभी चिकन चाहिए, इस लिटिल चाहिए ना, एक वैरायटी चाहिए. अगर हमेशा वो 4-3 प्ले फ्रॉम द बैक खेलोगे तो मजा कहाँ है फुटबॉल में? फिर यू नीड दैट पैशन, यू नीड दैट
आई थिंक अब जो नए मैनेजर्स भी आ रहे हैं कमिंग अप, वो भी थोड़ा सा दे आर अ लिटिल मोर कंफर्टेबल इन ब्रिंगिंग इन डिफरेंट सिस्टम्स रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू वन. लाइक लुक एट Xabi Alonso. Exactly. Exactly. I was gonna say the same. Yes. Who was the striker for Leverkusen? Really good name. I'm sorry. I'm forgetting. Euros में भी यार he played exceptionally. The name. नाम भूल गया मैं, रुक. विक्टर बोनिफेस Victor एक और Boniface. है, नहीं. वो नहीं, एक नहीं. है और एक का क्या ये वाला अरे यार कहाँ है? चेक player है. Patrick Schick. Sheik. Yes. हाँ He's another more traditional sort of a striker. Xabi Alonso He's brought been him. around for a while. He's been around for a while. But okay, So to end things. that as an example. So there new managers coming in are bringing in different systems. We are seeing return of some traditional roles. We are seeing different roles of wing backs advancing even more. Full backs से wing backs अब हम तो ये changes अभी दिखते रहेंगे. Why? So okay, to end things, the kind of strikers there are on the market right now. Not just on the market. The younger strikers, let's say 26 और 26 से नीचे, 27 से नीचे, because Gyökeres 27 का है. I'll extend it to that. मैं पहले 25 बोलने वाला था. Over the next 5 years, by 2030, when we talk about strikers from the previous decade, we talk about the likes of your Drogbas and all of that. Drogba, Torres, David Villa, and all of these people. Who do you think of the current lot under 26, 27 over the next 5 years? Who do you think can be that name? एक ही नाम चाहिए मुझे और कुछ ज्यादा नहीं. See, if Osimhen goes to a real club for once, he can be a lethal striker. वो ऐसा Okay. पैसे के लिए अलीलाल गालाडासराय है. नहीं तो नहीं. If he I goes don't to a think club, he's doing that, but okay. Victor Osimhen, Vaibhav का pick. Rex bhai? अल्वारेस Okay. Shivam Joe? भैया? I love Alvarez. I love Alvarez, but I'm going to try and take a different name. I am going to say I don't think अभी मेरे को कोई ऐसा समझ में आ रहा है like a very young striker that can become because they're scoring as many. I'd say like a proper number 9 में maybe if you want to extend as you extended to Gyökeres, वो ही है जो traditional number 9 भी लगता है शायद successful भी. For me, it is Isak. I genuinely How have old is very high Isak? hopes for him. How old is Isak? 25 का है. 25. Then I would have said Isak. Yeah. I genuinely have very high hopes for that player. He Again, is. regardless of whether he comes to Liverpool or not, if that ever happens, I don't think it will. But regardless of that, I genuinely think वो player का जो ceiling है, that is very high. I agree because वो भी traditional number 9 वाले role में है. So yes, if he's 25, he's got to be the pick. Yeah, I think on But that we note have we talked can about end it. Haaland as well. Established है यार, अब क्या established है भैया. हो चुका ऑलरेडी है उसका. ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हालैंड के ऑलरेडी भाई उसका जो गाना है ना डरावना वाला, Haaland, वही याद Haaland. रहेगा सबको. हाँ. बट या ऑन दैट नोट आई थिंक वी कैन एंड इट हियर. भाई लोग अपना अपना स्ट्राइकर प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट्स में बताते जाना प्लीज जरूर से. हु डू यू थिंक विल शाइन थ्रू इन द नेक्स्ट 5-6 years? That should be interesting for all of us to watch going forward. Mention some strikers that you love to watch play in the comments so we can talk about them more. Like कर दो guys. एब्सोल्युटली. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना. अगेन यूजुअल भी लाइक कर दो. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, शेयर करो थोड़े ज्यादा लोगों के साथ. एंड अगले वीडियो टॉपिक अगर कोई है आपके दिमाग में तो सजेशन भी डाल दो नीचे, उस पर भी बातें कर लेंगे बैठ के. क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो फिर. ओके.